cube root of unity. So please tell me, what do we mean by unity now? Reply in the chat box. Unity means kya? Oh, Harshit is saying together. Okay. Screen is not coming. I can see the screen. What is this problem, yaar? Just a minute. Hello students, now the screen is visible to all. And am I audible? Fine. देखो कभी कभी वाईफाई भी धोखे दे देते हैं. अभी मैंने जियो जियो मोबाइल नेट चालू किया, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो इट्स क्वाइट बेटर. फाइन. So let me again ask you the same question. Cube root of unity. So what do we mean by unity? Unity का मतलब क्या होता है? Yes, very good. Unity means English वाला unity नहीं यार, togetherness. Yes, unity in maths is called as one. Okay, and even one means togetherness, right? So you're not wrong, I'm saying. So can anyone answer me? 1000 rupees का सिटी वाई सर के जैसा चैलेंज है. Who can tell me cube root of 1? Answer of cube root of 1. 1000 rupees cash prize. Cube root of 1. Come on. I need a reply from all the students. Everyone is saying 1, 1, 1, 1, 1, 1. 173. What you written? Someone written something different. 0.173. Sayisha. What is that? अनीश ने बुक में से देख लिया. अनीश को प्राइज नहीं मिलेगा. Okay. See, till 10 standard, cube root of 1 means we say it's 1. Right? And you all are true. Cube root of 1 is 1. But cube root of 1 is not only 1, but also some other value. Yes? Cube root of 1 का आंसर 1, ये एक ही आंसर है.
बट और भी कुछ वैल्यूज होते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 के. अभी आपको क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई यू थिंक that there are more values of cube root of 1? Such a simple value of cube root of 1 is there, 1, easy to remember. Then why we need to, more answers of cube root of 1? The reason is, see, in 9th standard, when we solved a linear equation in one variable, like 2x plus 3 equal to, for example, 5. If you solve this equation, what do we get? 5 minus 3, 2. So we get x equal to 1. So when we solve a linear equation in one variable, we get one answer. Can you tell me any other x ka value which satisfy this condition? No answer. X equal to 1 is the only answer. Can you find out? Can you tell me some x का value here? जो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं और +3 करूं तो आंसर 5 आना चाहिए. Tell me. No. Okay. Similarly, if I write if this is the equation, x square minus 2x plus 1 equal to 0, we do middle term splitting. You remember? It's a quadratic equation. फैक्टराइज करते थे. 1 का ऐसा फैक्टर सब ऐड करने पर -2 मिलना चाहिए. So that is 1 1. So we used to write like this: x square minus x plus 1 equal to 0. Do you remember? Then x common, x minus 1 common, x minus 1. So x minus 1 equal to 0. So we get two answers: x is 1 or x is 1. Now here the two answers are definitely same, but still we can see that every quadratic will always have two answers. Do you agree? Do you all agree that? ये luckily दोनों जो आंसर मिले हैं वो दोनों सेम है. Okay, not an issue. But otherwise every quadratic will have two answers. And that is the reason when we solve root of mine, if I ask you root of 1, you used to give me two answers: +1 -1. Right? The reason is what? We assume root of 1 is x. Root of 1 is x. So 1 is x square. Then 1 will go that side. So 0 equal to x square minus 1. Then x square minus 1 can be written as x square minus 1 square. Then this looks like a square minus b square, which is a plus b, a minus b. So either x plus 1 is 0 or x minus 1 is 0. So x is 1 or x is minus 1. Hey, understanding? Square root of 1 के दो आंसर होते हैं. Square root of 1 has two answers. So we have seen if a linear equation in one variable has one answer, linear equation in quadratic equation has two answers, even the square root has two answer. Then ये cube root का logically तो मुझे लगता है 3 आंसर होना चाहिए. Yes, लॉजिक तो ऐसा लगता है, ये जो पैटर्न हम लोग ने ऑब्जर्व किया इसको देख के तो लगता है कि नहीं आपको कि इसके 3 आंसर्स होना चाहिए. व्हाट डू यू से स्टूडेंट्स? लगता है ना कि 3 आंसर्स होने चाहिए इसके. बट हमको तो 10 स्टैंडर्ड तक एक ही आंसर बताया कि क्यूब रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज 1. अदर टू आंसर्स क्या है? वी डोंट नो दैट. यस और नो? तो अभी वो अदर टू हम लोग को फाइंड करना है. राइट? अभी वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया. लेट्स फोकस हियर नाउ. Our target is to find out cube root of 1. So what I'll do, I will assume let cube root of 1 is equal to x. See, whenever we don't know any value, what do we do? We assume.
it is x, it is y. So I've assumed it is x. Tell me, ये क्यूब रूट को मैं अगर उधर भेजूंगा, ये क्यूब रूट को उधर भेजूंगा तो क्या होगा? Yes. So everyone said that it can be cube, right? X cube हो जाएगा. So in the next step, 1 is equal to x to the power 3. I'm transferring this 1 that side, so it becomes x cube minus 1 equal to 0. Now this is not a quadratic equation, so we cannot factorize it. Then how to solve this? So I can write this as x cube minus 1 cube equal to 0. X cube minus 1 cube equal to 0. Now, looking at this x cube minus 1 cube, you must be remembering this formula, a cube minus b cube. Yes? What is a minus a cube minus b cube? A minus b, then a square plus ab plus b square. This is the formula of a cube minus b cube. Right? I will apply the same formula here. So x cube minus 1 cube will become a minus b. So x minus 1, a square plus a into b plus b square equal to 0. And if I further solve it for one more step, x minus 1, this is x square plus x plus 1 equal to 0. Have you all understood all the steps till here? Please tell me. Have you all understood? Okay. Now, see, whenever we have two brackets and the product of two bracket is 0, we always write either this is 0 or that this is 0. Can anyone tell me why we used to write like that? X minus 1, x minus 5, 0. So हम लिखते थे x minus 1, 0 or x minus 5, 0. Why we used to write like this? We have seen in quadratic equation that we used to write like this. What is the reason behind it? I'm waiting for the answer, students. Acha, to get the x ka value. Rahul? No, that's not the correct answer. Prem, you are saying since both are equal to 0, so we can separate them. No, not at all. Not, that is not the reason. Because it is equal to 0. So what? So can I apply this rule here also? If I have x minus 1, x minus 5 equal to 2, then I can write x minus 1 is 2, x minus 5 is 2. Then I will write like this also. So Ishan, you are saying no here and yes here. Why so? Why so partiality?
अच्छा 0 × 0 इज 0. अच्छा तो मैं इसको भी ले सकता हूँ ना, ये 1 और ये 2. लेट अस टेक दिस एज 1, दिस एज 2, this is 2 and this is 1. Even 2 × 1 gives the same thing. Hmm? I think Krishna has answered very correctly in the chat box. See, whenever the product of two number is given to be 0, huh? Sir, while solving we send one of the bracket to right side to divide, therefore we try both. No, not that answer, Shravan, as well. 10th standard तक क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम ऐसे ही करते जाते हैं and we don't know why we are doing it. So the reason is what, if you have two numbers whose product is 0. Now my question to all of you, tell me two numbers, ऐसे दो नंबर बताओ जीरो नहीं होने चाहिए वो दोनों, बट मल्टीप्लीकेशन जीरो होना चाहिए. चलो, tell me two numbers which are non-zero. Tell me two numbers which are non-zero but the product is 0. Tell me such two numbers, come on. Yes, I need, everyone should think and brain chalna chahiye aap log ka. What am I exactly trying to tell you? There is no such numbers. So what do you mean by there is no such number? It's impossible. But still, if you are getting the product of two number as 0, then what can you say? Sir, see, the product of two numbers can be 0 only if either of them will be 0. I'm not saying both will be 0. It's not compulsory. दोनों 0 होगा तो ही 0 होगा, ऐसा नहीं है ना. Hey, understanding? So that is why we used to write कि a into b 0 क्यों है. अगर a into b 0 है तो इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या तो सेकेंड टर्म 0 होगा. और अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन 0 हो ही नहीं सकता. दोनों में से किसी एक को तो 0 होगा, इसलिए तो और लिखा. ये अंडरस्टूड? सो ऐसा नहीं x का वैल्यू फाइंड करने के लिए b को उधर ट्रांसफर करते हैं, ऐसा वो रीजन नहीं है. ये करेक्ट मैथमेटिकल रीजन है that whenever the product of two numbers is 0, then either of the number is 0, otherwise product cannot be 0. And that's the reason we take either the first term 0 or the second term 0. I hope it's clear. Here also the product of these two numbers are 0. If the product of these two numbers are 0, then definitely either of them should be 0. या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए. So in the next case, therefore, I can write either x minus 1 is 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Now x minus 1 equal to 0 will give you x equal to 1. But x square plus x plus 1 is a quadratic equation. अब ये quadratic equation को तो हमको solve करना पड़ेगा ना. Yes, चलो अभी solve करते हैं. Solve कैसे करेंगे हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. 1 का ऐसा फैक्टर बताओ ऐड करने पर 1 आना चाहिए. कम ऑन, टेल मी अ फैक्टर ऑफ 1 आफ्टर एडिंग आई शुड गेट 1. वाओ प्रेम. हाँ, टिल 10th स्टैंडर्ड हैव यू एवर यूज्ड 1 and 0 as two factor? हाँ, और वो रॉन्ग भी है. कैसे? आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी शुड गेट 1 and after adding I should get 1. So after multiplying I will get 0 na here. What half? Saisha. Sorry, I'm not able to pronounce your name properly. Half and half. Okay. So in 10th standard, we learned a method of factorization. But have you ever taken fractional splitting of factors? Have you divided a number into fraction? चलो तुम लोग ने हाफ हाफ बोला. I'll consider that also. हाफ हाफ. सर ऐड करने पर 1 आता है. अरे बट मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आना चाहिए ना. ये समझे क्या आप लोग? याद करो, क्वाड्रेटिक भूल गए लग रहा है 10th स्टैंडर्ड में. सायशा समझ में आ रहा है आपको?
half after you add it, then you get 1. But what about multiplication? Multiplication should give 1, but that it is not giving, so we cannot take. So actually middle term splitting is not possible. There is no such factor of 1 which we can use, to split the middle terms. So whenever we fail to go for a factorization method, we go for completing square or a formula method. Here I will go with formula method. So formula method हम कैसे करते थे? We used to write like this: comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a as 1, b as 1, and even c as 1, right? After this, we used to find out b square minus 4ac delta. So that is 1 square minus 4 into 1 into c. So it is going to be 1 minus 4. It is going to be minus 3. Now for the new students, other students very well know how to solve it now. But new students, you remember in 10th standard, whenever we used to get negative b square minus 4ac, we used to stop there. We used to discard the solution, saying that, this is not a real number. Do you remember, new students? Please reply. Do you remember such thing? We have done it in class 10 quadratic. Why we used to do like that? Because in formula, b square minus 4ac is under root. So when we take root of b square minus 4ac, then we have to take root of minus 3. And now root of minus 3 is not a real number. Why? Because there is an important property of real number. A is suppose a real number. A is a real number only when the square of that number is greater than or equal to 0. This is the rule for all the real numbers. किसी भी नंबर को रियल बोलने के लिए आपको उसका स्क्वायर करना है, और अगर स्क्वायर का आंसर 0 लोवेस्ट या तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर आता है, तो ही हम ए को रियल बोल सकते हैं. अभी आप रूट माइनस 3 को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? Yes, root minus 3 square will be minus 3, isn't it? And minus 3 is less than 0. That is why root of minus 3 is not a real number. Yes, it's a negative number. So that is why this is not a real number. And then we used to discard in class 10. But now, since here we are learning complex number students, तो जो नए बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है कि इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं. अभी ये जो पार्ट था डिस्कार्ड का, वो हम नहीं करेंगे. हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? तो ध्यान से देखो. रूट माइनस 3 कैन बी रिटन एज, just tell me yes or no, new students only. Can we write 3 into minus 1? Indra, then Saisha, please reply. Can we write like this? Anish, you are also new. Can we write like this? Yes. Then further, can we write this as root 3 into root of minus 1? Yes. Okay. Now in complex number, we have studied a new symbol. ये लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स का स्टूडेंट. जो बच्चे नए हैं, ये हम पूरे चैप्टर में ये सिंबल यूज किया है. बट टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन, आप लोग अभी बाय हेड रखो. देयर इज अ न्यू सिंबल कॉल्ड एज आई. आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. आयोटा. ओके. और इसका एक फिक्स वैल्यू है जो होता है रूट ऑफ माइनस 1. इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में बच्चों. अभी हमको याद रखना है कि आई का वैल्यू रूट ऑफ माइनस 1 होता है, राइट? So what I'll do, I will write root of minus 1
in place of this root minus 1. So now my root minus 3 will become root 3 into I. This is the value of root of b square minus 4ac. And now I will write the formula of x of 10 standard minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2 into a. Substituting the value, b का वैल्यू 1 है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है अपने को रूट 3i. राइट डाउन रूट 3i upon 2 into 1. Then further solve this, minus 1 plus root 3i upon 2 ones are 2, plus or minus. So we will separate plus or minus. So I will get minus 1 plus root 3i upon 2, or I will get minus 1 minus root 3i upon 2. These are the value of x. So now, don't you think that we have got three values of x? One is x equal to 1 that we used to do in our school days. And here we have got two values of x. One is minus 1 plus root 3i upon 2, and another one is minus 1 minus root 3i upon 2. Have you all understood? Have you all understood this concept of cube root of unity? Okay. Now, if you observe last two numbers, last two answers of x, you can say some relationship between these two numbers. What is the relationship between these two numbers? Come on. ये जो लास्ट के दो x के आंसर आए हैं उसमें कुछ तो रिलेशन है. बताओ क्या रिलेशन है? न्यू स्टूडेंट्स शायद आंसर नहीं दे पाए, बट जो लास्ट 3-4 लेक्चर से अटेंड कर रहे हैं, दे कैन डेफिनेटली आंसर इट. Come on, students. Very good, Shravan. They are, Anish, conjugate of each other. Yes. New students, conjugate क्या होता है? ये एक नया वर्ड है कॉम्प्लेक्स के अंदर. Conjugate का मतलब क्या होता है? Normally complex number we write as z, और उसके अंदर दो टर्म होते हैं a plus bi. एक टर्म विदाउट i के साथ होता है और एक टर्म विद i होता है. So when we write conjugate, conjugate can be written as z bar, and we write that as a और bi लिखते हैं हम लोग, but we change the sign of ith term. यानी a पॉजिटिव था, a को हमने चेंज नहीं किया, बट जो bi टर्म था उसको हमने चेंज किया. ठीक है, उसका साइन चेंज कर दिया, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट. सो डोंट यू थिंक हियर आल्सो इट इज लाइक -1 प्लस रूट 3i -1 माइनस रूट 3i. सो दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. क्लियर है सबको? न्यू स्टूडेंट थोड़ा समझ में आया क्या कॉन्जुगेट का मतलब? जो हम रैशनलाइजेशन करते थे ना वैसा ही है, बट यहां पर फिक्स है कि आई वाले टर्म का साइन चेंज होता है. यस इंद्रा, Saisha, understanding this? Okay, fine. Now, so I'll write down the cube root of unity. So now cube root of unity will be called as complex cube root of unity. Why complex? Because other two answers are complex. So that is why it is complex cube root of unity. Okay. So now we all know that cube root of 1 has three answers. 1 or -1 plus root 3i upon 2, or -1 minus root 3i upon 2. Now, there is certain relationship between this and this. One relationship you all said that they are
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। बट और भी एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में वो रिलेशन सॉल्व किया था, ठीक है? व्हाट वाज दैट रिलेशन? यू नो, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका, यू रिमेंबर एक क्वेश्चन था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए, वी यूज्ड टू प्रूव दैट। मैंने बोला था लास्ट एक्सरसाइज में इसका यूज होगा, आई विल टेल यू। हाँ, तो वही है ये। अगर मैंने इस नंबर का स्क्वायर किया तो आपको ये मिलेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। yes, new students can check also. If you take whole square of this and solve, you will get this, and if you take whole square of this and solve, you will get this, right? मैं वन साइडेड बता देता हूं, एक वन साइडेड बता देता हूं। आई टेक द फर्स्ट पार्ट, कंसीडर -1 plus √3i upon 2 the whole square. So square will go to the numerator, also to the denominator. So it will be -1 plus √3i the whole square upon 2 square. Now a plus b the whole square formula, a square plus 2 into a into b plus b square upon 2 square is 4. Further, -1 square is 1, 2 into -1 is -2 √3i। किसी को कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लो। √3 का स्क्वायर 3, i का स्क्वायर i स्क्वायर अपॉन 4। नए बच्चों, आपने अभी पढ़ा i का वैल्यू √-1, तो अगर i का वैल्यू √-1 है तो i स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो -1 मिलेगा ना। यस न्यू स्टूडेंट्स, डू यू एग्री? √-1 का स्क्वायर इज -1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 कैसे हुआ? ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1 - 2 √3i प्लस 3 into -1 upon 4. Further, 1 - 2 √3i as it is, 3 into -1 -3 upon 4. उसके बाद can we add this 1 and -3? 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2 √3i as it is upon 4. I can take 2 common. I will be left with -1 minus √3i upon 4. 2 ones are 2 twos are. So I will get -1 minus √3i upon 2 as a final answer. And don't you think this is the third answer of cube root of unity? Just check it out. देख लो, यही आया. And similarly, if you square this, you will get this, right? So now we have come to know certain relationship between the cube root of unity, and that is why अभी देखो क्यूब रूट ऑफ 1 का ये आंसर कितना अच्छा लगता है ना, 1। ये कितना ऐसा लिखने को भी कितना ऐसा लगता है, अरे क्या लिखा है ये, -1 plus √3i, ठीक है? तो ये जिसने भी कॉम्प्लेक्स बनाया था ना, उसको मैंने लेटर लिखा था। मैंने बोला यार अपने बच्चे लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, ये ऐसा ऐसा देखने को बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा इजी बोलना है कि नहीं? तो उस बंदे ने क्या किया, बोला अच्छा इजी चाहिए, तो उसने एक सिंबल दिया। बोले कि एक काम करो, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ना, उसको एक सिंबल से लिखो, जिसको हम लोग रीड करेंगे ओमेगा। फिजिक्स में आप लोग यूज करोगे ओमेगा। एंड सिंस यू नो, फिर उसने एक नंबर तो दिया मेरे को ओमेगा। अभी बोला अभी तीसरे को क्या बोलेगा, तो उसने बोला कि अरे इसका स्क्वायर ये होता है ना, तो अगर ये ओमेगा है तो ये क्या होगा? बोलो बंदे, क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। समझा क्या? So now we can conclude that complex cube root of unity, again one more time I'm writing complex cube root of unity क्या होता है? There are 3 answers of complex cube root of unity. एक है 1 और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओमेगा किसको भी ले सकते हो, सेकंड को ओमेगा लोगे तो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर, थर्ड को ओमेगा लोगे तो सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर। ओके फाइन। नाउ there are few properties of this complex cube root of unity. Property number one, property number one, अच्छा जस्ट टेल मी, ये जो इक्वेशन से हमने x का वैल्यू, ये सब x का वैल्यू है ना, क्यूब रूट ऑफ वन, वन x का वैल्यू ओमेगा आया, x का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, बट एक्चुअली ओरिजिनल इक्वेशन ये था ना, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसको ही सॉल्व किया था ना हमने, तो हमको वन आंसर आया, ओमेगा आया और ओमेगा स्क्वायर। ये सर रोज बच्चों कम ऑन। ओके, तो मैथ्स में हम लोग ने एक चीज लर्न किया है, that suppose if this is the equation and if I say x equal to 2 is the solution, if I say x equal to 2 is the solution, it means what? If I put 2 here, left hand side equal to right hand side, yes or no? Come on. अगर कोई बोले x equal to 3 इसका solution है, it means what? If I put x equal to 3, left hand side will be equal to right hand side, right? So now if I put 1, x equal to 1 पहला आंसर है, 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, होता ही है ना, 1 माइनस 1 0, ऑब्वियस ही सर। तो सिमिलरली अगर ओमेगा भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो x के जगह ओमेगा पुट करने पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। अरे यस और नो? सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द सेम, दैट इफ आई पुट x के जगह पर ओमेगा, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0, so omega cube is 1. This is the first property. ये सबको समझा क्या? Understood everyone? First property. Second property, add all the solution of answer of cube root of unity. चलो ऐड करते, सबका वैल्यू तो हमको मालूम है, 1 तो 1 है, ओमेगा क्या था, माइनस 1 प्लस रूट 3i अपॉन 2, ओमेगा को प्लस लिखा तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस 1 minus root 3i upon 2. Hey, have you all understood this step? This is omega and this is omega square. Okay, now how to solve this? ये बेचारा 1 को तो ऐसा ही रखना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं, 2 2 LCM is same, so we will just add them, minus 1 plus root 3i plus minus 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 root 3i. Now minus root 3i plus root 3i cancel, then what is left, 1 plus minus 1 minus 2 upon 2, then 1 plus minus 1, 1 minus 1 equal to 0. So we have got the second property of complex number, that the sum of complex cube root of unity is always 0. We'll write that statement, sum of complex cube root of unity is always equal to 0. Yes, everyone understood this? हमने सब डिराइव कर रहे हैं, मतलब कुछ मैं आपको रट्टा नहीं मरा रहा हूं, एवरीथिंग वी आर प्रूविंग व्हाई इट इज सो क्लियर. Okay, third property, we know what is omega, second answer. So omega bar क्या होगा, conjugate of omega, that is omega square.
ये समझा क्या? हम लोगों ने क्या बोला? वो जो सेकेंड और थर्ड सोल्यूशन है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. सो ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा. ये समझा क्या? कम ऑन एवरीवन. प्रेम सोनी नो. अगर सेकंड का कॉन्जुगेट करूंगा तो थर्ड मिलेगा, थर्ड का कॉन्जुगेट करूंगा तो सेकंड मिलेगा. तो ओमेगा मैंने सेकंड को बोला, तो सेकंड का कॉन्जुगेट किया तो थर्ड मिला, दैट इज ओमेगा स्क्वायर. और थर्ड को कॉन्जुगेट किया यानी ओमेगा स्क्वायर को कॉन्जुगेट किया तो ओमेगा मिलेगा ना. प्रेम समझा क्या? ओके. Okay, so this is all about complex cube root of unity. Understood? हाँ, किसी ने कुछ पूछा ओमेगा क्या होता है, कुछ तो बोला चैट सिग्निफाई. सर ओमेगा का वैल्यू इज फिक्स्ड. यस, मतलब मैंने फिक्स मतलब क्या, अगर सेकंड को भी ओमेगा बोल सकते हो और थर्ड को भी ओमेगा बोल सकते हो. इफ यू आर टेकिंग सेकंड आंसर एज ओमेगा प्लस वाला, then omega square is minus wala. And if you take minus wala as a omega, then second wala will be omega square. It's vice versa. मतलब फिक्स नहीं बोल सकते ओमेगा मतलब ऑलवेज प्लस या ऑलवेज माइनस. ओमेगा लुक्स लाइक डब्ल्यू ओनली, बट ऐसा थोड़ा कर्व होता है एक्चुअली. ओमेगा अगर देखेंगे तो ऐसा होता है, बट नो प्रॉब्लम इफ यू जस्ट राइट डब्ल्यू, नॉट एन इश्यू. बट बोलो मत डब्ल्यू बस, नहीं तो फिर इतना पढ़ाने के बाद बोलेगा डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू. हाँ, तो फिर सब तुमको बबलू बोलेगा, है कि नहीं? तो एटलीस्ट लिखो डब्ल्यू लेकिन पढ़ो ओमेगा. हाँ. ओके, तो लेट्स सी द टेक्स्ट बुक नाउ. टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये सब तो कर लिया हम लोगों ने. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो क्यूब में, वो हम लोग देख लेते हैं. See, we have just now seen in the second property that omega cube is 1. अब इसका बहुत फायदा है ओमेगा क्यूब 1 का. कैसे? इधर देखो. I ask you what is omega raised to 4. What will you say? Sir, simple. Omega cube into omega. But omega cube is 1. So 1 into omega. So 1 into omega is omega. They understood of what? Very good. Okay. If someone asks you, what is 1 upon omega? 1 upon omega. क्या करेंगे? Yes. Simple. 1 upon omega है ना. अभी अपने को मालूम है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है. Isn't it? So what I'll do, I will multiply and divide by omega square. I can do that in maths, right? Anything I can multiply and divide by the same term. The value doesn't change. So now numerator 1 into omega square will become omega square. Denominator omega into omega square will become omega cube. But again omega cube is 1. So omega square upon 1. So it is going to be omega square. अरे समझा क्या? Yes. Sixth property. Instead of 1 upon omega, I am writing 1 upon omega square. Tell me, what should I do? What should I do? Multiply by omega, right? Because omega square hai. So 1 into omega is omega. This is omega cube. So it is going to be omega upon 1. So it is going to be omega. So very simple to remember. 1 upon omega square is omega. 1 upon omega is omega square.
ओमेगा रेस टू 4 इज ओमेगा. लिखने का घाई मत करो, ये सब पूरा पीडीएफ में भेजूंगा ग्रुप के अंदर. यू विल गेट ऑल दिस नोट्स. हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दीज प्रॉपर्टीज? आई नो यू नो टाइम हो चुका है, बट स्टिल हम लोग को जरा कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट के ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज है, उसके सम्स हम लोग कर लेते हैं. ये तो अननेसेसरली वो एक छोटे से एक्सरसाइज के लिए पूरा यू नो रिवाइज करना पड़ेगा. नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यू चैप्टर फ्रॉम मैथ्स 1. So I think we have studied all the basics required to start the exercise now. So let's start the exercise. Exercise 1.4. Exercise 1.4. First question. It is so simple, students. हमको क्या करना है? ओमेगा रेस टू 3 1 मालूम है ना, सबको ओमेगा रेस टू 3 में कन्वर्ट करो. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट. Exercise 1.4, last exercise. Question number 1. First, omega raised to 18. How will you write? Omega raised to 3 raised to 6. Law of indices. Omega raised to 3 is 1, 1 raised to 6. So the answer is 1. As simple as that. अभी orally बता दो चलो. 21 को क्या लिखोगे? Omega raised to 21. Come on. Omega raised to 3 raised to 7. अरे आंसर मत बताओ यार. 1 explanation. Omega raised to 3 raised to 7, that is 21. So 1 raised to 7, so it is going to be 1. Third, come on. Third. Omega raised to 3 raised to omega raised to 3 raised to minus 10. 1 raised to minus 10 is also 1. 1 का कोई भी पावर लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लो, आंसर इज गोइंग टू बी 1. लास्ट वन, omega raised to minus 105. Omega raised to 3 raised to what? Omega raised to 3 raised to what? Come on. Absolutely right. 35. 3 से divide करोगे तो you will get 35. So it's going to be minus 35. So 1 to the power minus 35 is going to be 1. Okay. I hope the question number 1 is clear to all. Now question number 2. If omega is a complex cube root of unity, it is given, huh? Omega is a complex cube root of unity. Show that, oh my god, so many questions are there. Oh, so can you all start with left? First question, write on. Second ka first. Write down to prove that this, and then we'll take LHS. Question number 2. First, to prove that 2 minus omega square, we want to prove it is equal to 7. Proof. How will I start? LHS equal to 2 minus omega. अभी पहले स्टेप पे देखो कोई फॉर्मूला है क्या? अभी ओमेगा क्यूब तो किधर दिख नहीं रहा, ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, उसको क्या कर सकते हैं? सो देन आई थॉट ऑफ चलो मल्टीप्लाई करते हैं. इफ आई मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लाई पहले उधर होगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. समझ रहा है क्या? माइनस ओमेगा का मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब. हे अंडरस्टूड? Now, if you observe the middle two terms, don't you think I can take minus 2 common? So minus 2 common लिया तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब. नाउ बच्चे लोग, अपने पास 2 रूल था. एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा ओमेगा क्यूब 1, वो तो रिप्लेस कर देंगे.
दूसरा हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. So don't you think omega plus omega square will be? Come on. What will be omega plus omega square? Answer me. अरे यार जीरो किधर से? Think again. 1 plus omega square is 0. So what is omega plus omega square? Those who have said 0, please correct themselves. 1 will go that side. So it will become -1. Yes? Okay, so we'll do that. So now what will be left? अच्छा कुछ बच्चे ना जोश में आ जाते, 4 - 2 2 लिख दिया. अरे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है भाई, इसके साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा पहला. ये समझ रहे क्या? सो 4 - 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इधर से निकाला -1 plus omega cube is 1. So if I solve this, it is going to be 4 plus 2 plus 1 is going to be 7, and that is your right hand side. Have you all understood this proof? And actually this is going to be the very important property, because see, sometimes we will have omega plus omega square, then we will write -1. If suppose I have only 1 plus omega, then that will be minus omega square. If I have 1 and omega square, then it will be minus omega. So ये 3 एक फॉर्मूले से 3 और रूल हम लोग बना सकते हैं, राइट? ओके, so next question. 1 plus omega minus omega square raised to 6. Oh, looks difficult. Let's try to prove that 1 plus omega minus omega square raised to 6 is equal to 64. Proof. Definitely we will start with left hand side. Chalo, tell me the first step. First step, what should I do? किसी को रेस टू 6 का पावर मालूम है तो बोल दो भाई. What can I do? Come on, come on. Yes, just now I told you that you have 1 plus omega square is 0, right? Let me write that property there itself. किधर गया वो property? Yeah, here we derived that 1 plus omega square is 0, right? So actually this gives you 3 aspects, right? First, if you have 1 plus omega, we can write minus omega square. If we have 1 plus omega square, we can write minus omega. And if we have omega plus omega square, we can write -1. Hey, understanding students? Right? So let's go down now. So this 1 plus omega can be now written as bracket के अंदर minus omega square. And already minus omega square is there. So minus omega square is -2 omega square raised to 6. Now this 6 will go to all the terms, even -2 raised to 6 होगा, और ओमेगा स्क्वायर का भी रेज टू 6 होगा. माइनस को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट्स गोइंग टू बी प्लस, एंड 2 raised to 6 is 64. 2 2 za 4, 2 za 8, 2 za 16, 2 za 32, 2 za 64. And this is going to be omega raised to 12. 2 6 za 12. Right? But 12 can be written as, come on, 3 and 4. Now this is 64 into 1 raised to 4. 1 raised to 4 is going to be 1.
So the answer is going to be 64, and that is your right hand side. I hope all of you have understood clearly how to solve these type of problems. Okay, so all of you have to try these all sums. क्योंकि अभी time बहुत हो चुका है. I cannot solve more problems, but definitely you try all question number 2, all question number 3. Yeah, 2 and 3 you all can try, and if you don't get any of them, then we will discuss in the next class. Okay, students. So question number 2 and question number 3 will be homework for every one of you. Fine. Okay, so thank you very much. See you all in the next lecture. Hmm? You will be informed about the next lecture in the next by the message in the WhatsApp group. Acha, one more thing, students. There are few students who have, enrolled or added in the group with two different accounts. Maybe initially we added your parents' number in the group, and later on your parents asked to add. 15 minutes left. 5:30 बोला था क्या? अच्छा, सॉरी, आई थॉट 5 o'clock. तब तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. Delete the draft. Okay, sorry. I thought it's 5 o'clock, so I thought I'm exceeding the time. Because we started 4 o'clock, right? चलो, we have time, so we can do few some more sums. No bye. कोई लेफ्ट तो नहीं हुआ ना बीच में? ये तो कुछ लोग होते हैं, सर जैसे ही बोलेंगे बाय तुरंत लीव कर दिया. जिसने मुझे ये बताया वो बोल रहा है मेरे को नाम मत बताना. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो चलो, अभी तुम लोग एक ट्राई करो, फिर अच्छा किया तुम लोग ने बता दिया. थर्ड वाले तो हम ओरली कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन LHS लिया. बोलो यहां पर क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा की जगह पे 1 प्लस ओमेगा. 1 प्लस ओमेगा, कम ऑन. व्हाट शुड आई राइट इन प्लेस ऑफ 1 प्लस ओमेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट. अभी माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब क्या होगा? अभी क्यूब बोला तो माइनस विल रिमेन माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब विल बी माइनस ओमेगा रेज टू 6. डू यू ऑल एग्री? कम ऑन. माइनस ओमेगा रेज टू 6. बाद में ओमेगा रेज टू 6 को 1 लिखने आता है अपने को. 3 रेज टू 2. अरे यस और नो. सो ये होने वाला है -1. दिस इज गोइंग टू बी -1. क्लियर? अभी इधर आते हैं. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा. और माइनस ओमेगा का क्यूब, माइनस ओमेगा का क्यूब, माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा का क्यूब इज माइनस ओमेगा क्यूब, दैट इज -1. सो माइनस ऑफ -1 इज +1. सो इधर -1 था, इधर +1 था, 0. ये आएगा ना 0. नॉट अंडरस्टूड कृष्णा? घर पे लिखना, सॉल्व करना आएगा. हाँ, थर्ड आई एम नॉट सॉल्विंग. कृष्णा यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. दैट इज वेरी इजी. आप लिखो और सॉल्व करो, आपको आएगा. नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो. अभी हम लोग फोर्थ स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. I'll directly take LHS only. 2 plus, what was the question? 2 plus omega square raised to 3. Then plus 1 minus 3 omega plus omega square. और आंसर क्या है? 65. ओके, चलो. अच्छा, इट्स माइनस इन बिटवीन, वो नहीं देखा मैंने. ओके, माइनस. चलो, so we need 65 as an answer.
कुछ प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन राइट है ना? हाँ. Now let's solve this. Tell me what can we do here. Let me ask. Don't reply. देखा रिप्लाई कर दिया तुम लोगों ने. जिसको पूछूंगा वही बताता ना. ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा. एक हिंट अभी हर्षित ने लिख दिया. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज -1. लेट मी ट्राई विथ सम न्यू स्टूडेंट बिकॉज वो लोग आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए. साइशा प्लीज टेल मी सेकेंड टर्म में क्या करेंगे. व्हाट कैन वी डू इन द सेकेंड टर्म. Look at the second term. Like we have some combination here. Can we do something here? Indra can also try. What can we do, Saisha, there? Which two terms we should combine? And what will be the answer of that? Rahul can also answer. I'm waiting for the answers, kids. Minus omega minus 3 omega. Okay, Mansi. But I asked which two terms I am combining. Yes, I think few people are not able to type and answer me. I can understand. They know the answer, but they're not able to type it. See here, we can combine 1 and omega square, right? With the same formula. So here I can now write 2 as it is, plus as it is. Omega plus omega square is -1. -3 omega as it is. 1 and omega square, ये दोनों को combine किया तो I will get minus omega. और दोनों के पावर में रेज टू 3 था. सबको समझा? ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है. ये कैसे आया? तो पहला प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. Have you got it? So now we will solve this. So it is going to be 2 plus minus minus, so 2 minus 1 the whole cube minus 4 omega the whole cube, then 2 minus 1 is 1 the whole cube. So minus ka cube will be minus 4 cube is 64 and omega cube is omega cube. Now omega cube is 1. So this minus minus is plus, and 64 into 1 is 64. So it's 65. So it's right hand side. Clear सबको? So very simple. Similarly fifth कर लेना. Sixth one. चलो जो सिक्स कर देगा ना उसको मैं मान जाऊंगा. है दम बंदे में. Sixth one, come on. I'll write the question. We have to prove that it is equal to omega 6. ईशान is not able to see the screen. Students, बाकी लोग को screen दिख रहा है क्या? Then Ishan, I don't know what's the problem.
Let me see who proves this. 2 minutes is the time. अनीश हिंट दे देगा तो फिर क्या मतलब है? डिफिकल्ट, तुमको खुद को सोचना है. आदित्य पात्रो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा. सो चलो, अनीश अंडरस्टूड. Aditya, what you did? You said done. Other students try. अनीश कुछ भी कर रहे हैं, बाकी लोग ट्राई करो. Aditya, what are you writing? Question is this. You are just taking omega cube as one. Yes, yes. WhatsApp me, Aditya. बाकी लोगों का क्या है? Chalo, let me solve this now. So actually, there are many ways to solve this particular question. Even Anish was right and Aditya is also right. But I don't know Aditya का वो बीच का steps कहाँ पर गया, इसके लिए I said no to him. There are two ways. Either you multiply and divide by omega square, or you multiply and divide by omega. Both will give the answer. Omega simple है, omega का multiply divide किया मैंने. देखो students. So what will happen in the next step? This omega will go and multiply to all the terms. Yes or no? And even the denominator will go and multiply to all the terms. So I will get here numerator a omega b omega square
प्लस सी ओमेगा क्यूब, राइट। ये ओमेगा का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेगा, बट मैं डिनोमिनेटर को अंदर नहीं लेके जाऊंगा, मैं उसको बाहर ही रख दूंगा. I will keep it here. Why? Because I can see that there are some similarity between these two brackets. So for example, in the next step, this omega cube is becoming 1. So c into 1 will become c here, first term. Then I have a omega and I have b omega square. Students, understanding? Denominator is also the same bracket. Only omega is left here. So now you can see here, this two terms gets cancelled. So I am left with 1 upon omega. And we know, we have learned a property, 1 upon omega is omega square. वो भी कैसे किया हमने, omega square का multiply. So numerator will be omega square, denominator will be omega cube, omega square upon 1. So omega square. Have you all understood? सबको समझ में आया? Okay. ठीक है, सो ऐसे सम्स हैं कुछ आपको. Sasha, have not understood or understood? Omega cube question mark. Where it has gone? From which step you are telling? From here. C omega cube. I'll unmute you, Sasha, because Shad, you are not able to ask your question. Unmute yourself, Sasha. Hello. Hello. Yes, Sasha, say. Sir, C omega 3. Yes. Yeah, so I'm confused over here because you had separated C and then you kept that W somewhere else. So I'm just confused in that. See, what I have done is, suppose I have two terms here, A upon B, right? I have A plus B upon C plus D, for example. Okay. I am multiplying by 2. Now what I have done is, see, in both way it is like 2 into A plus B and 2 into C plus D. Have you understood this step? Yes, yes. Okay. Now what I'm doing is I'm just taking these two inside. So it is going to be 2A plus 2B, but I'm not getting this 2 inside. I'm keeping it outside. That's absolutely fine. I can do that. Yes, yes. So now see here. I have multiplied and divided by omega. Now the numerator omega I multiplied inside the bracket. So it is going to be omega into A omega, omega into B omega square, omega into C omega square, C omega cube. But denominator I have not multiplied, I have kept it as it is. Understood? Yes, yes. So this omega is here and this omega is actually multiplied inside. Yes. Now, after this, in the next step, what I did is, I know that omega cube ka value is 1. Yes, yes. So omega cube is 1. So C into 1 is C. Okay, yeah. That I have written here, C. Okay, and then okay, A omega as it is, B omega square as it is. Yes. And denominator is also as it is. Yeah. Understood now? And then both get cancelled. Yes, sir. Both brackets. And see, that is why we have kept this omega out. Na?
because otherwise if I would have multiplied this, then I was not able to cancel it. Since it is outside only, we are getting the same term, so I could cancel it. Okay. Understood? Yes, yes, sir. I understood. Okay, fine. Thank you. Welcome. Okay, I hope everyone understood this. Same questions can be done by multiplying and dividing by omega square also. I hope it is clear to all of you. Okay, so now you all will try the remaining problems at home. 7th, 8th, 9th, all these questions, just cross multiply, solve. Take something common, you will understand, you will come to know. Make whole cube, solve this. इसमें सोचो क्या करोगे, थोड़ा सा आप पहले सोचो, आप ट्राई करो, नहीं आएगा then I will do it. Okay students, so I am sending you the PDF of this today's lecture. So if you have not understood or you want to make a note of this, so you can take a note of this. Okay. I was telling what when I was leaving, many of you have logged in into different numbers in WhatsApp group. So number of students shows many more. So do one thing, आप एक ही student का number WhatsApp group में होना चाहिए. If it is your personal number, then get it removed from your parents number. Okay, remove your parents number from the group. Because I don't know, because two names are showing there. For example, Shravan, so Shravan 1, Shravan 2. So I don't know, which one is parents number and which one is students number. So please remove one number, left the group from that from that number. Okay, so thank you very much students. I'll send you the PDF of this chapter right away. Thank you very much. Bye bye.